ओके, तो आपको समझ आ रही थी ये वाली ना? Yeah. अच्छा, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब ये देखें कि इट इज़ लेस देन 3 ओनली, लेस देन -3, सो वी हैव टू मेक few numbers. For example, let's say -3 is here, then -4, -5, and -6, -2, and -1. So, will I fill? Shall I fill this bubble or not? Yes. और इसके आगे फिर आप नहीं लाइन बेटा, लगाएंगे नहीं, माइनस। बबल फिल नहीं करना। ओके। एंड बिकॉज इट इज वी हैव टू मेक ए लेस देन, तो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। या वैसे भी हमें पता होना चाहिए विद कॉमन सेंस कि -4 -3 से स्मॉलर है, -5 इज लेस देन -3, -6 इज, सो वी हैव टू मूव इट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, राइट? या। ओके, एक पर्पस था मेरा, वो तो हुआ ही नहीं। एक सेकंड को, या दैट्स गुड। ओके, सो लेट्स डू दिस वन। अब इसको कैसे करेंगे? जस्ट कंसिडर इट एज a normal x over 5 equal to 2.4. What would you do अगर ये इस तरह से होता? तो आप 5 को दूसरी साइड पे ले जाओगे, तो it will become x is 12। greater than or equal to 2.4 times 5. So you will get x is greater than, क्या 12। आंसर आएगा? हाँ, 12? या। Are you sure? Okay. So आपके पास ये आ गया, x is greater than 12 आपने बनाना है ना? तो नंबर लाइन पे किस तरह से हम शो करेंगे? We have to show, for example, let's say this is 12, let's say this is 12, then this is 13, 14, this is 15, and then this is 11, this is 10, right? So it's greater than or equal to 12. तो अब आप मुझे ये बताओ कि should I fill the bubble or not? This time I will make a bubble over here. Should I fill it or not? नो। But I need to fill it because he is greater than or equal to, जब भी ये वाला साइन होगा, let's say जब इस तरह का साइन होगा तो बबल फिल करना है, जब इस तरह का साइन होगा फिर भी बबल फिल करना है, बिकॉज इट मीन्स के एक्स इंक्लूड दैट नंबर। जब ओके। जब इस तरह का साइन होगा लेस देन, इट्स मीन नंबर इज नॉट इंक्लूडेड, एक्स इज लेस देन 12, 12 नहीं है, लेकिन उससे 11.9 हो सकता है। सिमिलरली व्हेन ग्रेटर देन, इवन देन यू विल बी यूजिंग दिस बबल। सो अब देखो ग्रेटर देन 12 है, तो 12 से बड़ी कौन सी वैल्यूज होती हैं? 13, 14, 15। सो यू विल मूव ऑन टू दिस साइड। सो दिस इज हाउ वी स्केच ऑन द नंबर लाइन एज वेल। अच्छा, अब देखो मैं आपसे बताता हूँ एक और चीज़ जो मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ ना। हाँ, ये तो इजी है ये। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, यू आई टोल्ड यू कि there is only one problem in solving inequalities, and it is that your x should not be negative. What? X should not be negative. Because x should not be negative, so you have to keep it in such a way that it is positive. For example, when you will take this minus x onto this side, what will happen? You will get 5 minus 10. Obviously, when you have to take 10 onto this side as well, because you're going to find out x. So 5 minus 10 is less than or equal to x, right? Then minus 5 is greater, less than or equal to x, or can you write it down like this one? Okay, x is greater than or equal to -5. या। ठीक है ना? इफ यू हैव टेकन, इफ यू हैव स्विच दिस साइड ऑफ x, तो फिर इसको भी चेंज कर दें। अब आप देखें कि यहाँ पर हम फिर से नंबर लाइन अगर बनाएं, ओ हाँ, तो ये रही नंबर लाइन। इफ यू विल मेक दिस नंबर लाइन हियर, हाउ शुड इट लुक लाइक? अब देख, अब हमने -5 को प्लॉट करना है, तो वी शुड राइट डाउन -5 समवेयर इन द मिडल, और छोटे नंबर इस साइड पे, बड़े नंबर इस साइड पे। शुड आई फिल द बबल और नॉट दिस टाइम? यस। Yeah, I should fill it, right? So I will fill the bubble and I will point it towards left right hand side. Sorry, मैं पहले गलत बोलता रहा, राइट, एक्चुअल में ये राइट है यार, इसमें है थोड़ी वो, अब ले जाना। हाँ यार, ये भी चलो, बस ठीक है, नहीं रहने दें। ओके, तो राइट साइड ये वाली होती है, तो आपने इसको इस तरफ को प्लॉट करना है। ओके,
Okay. Is it clear or not? Yes. अच्छा, जिस तरह से ये इट इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें डेसिमल सॉरी फ्रैक्शन आ जाती है, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड बी द एलसीएम ऑफ दिस होल थिंग? एलसीएम विल Um, बी 2। hmm. 2 होगा ना एलसीएम। जो भी डिनोमिनेटर में होगा ना, आप उसका एलसीएम लें और हर नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दें। इट विल मेक योर लाइफ ईज़ियर। फॉर एग्ज़ाम्पल you multiply this thing with 2, multiply this with 2, and multiply this with 2 as well. So 2 will cancel out and you will get what? X plus 1.5 times 2 is equal to 3 is greater than 12. So what will happen? So you can write down X is greater than 12 minus 3 So and x is X greater is than 9. greater than 9. Yeah, exactly. So Okay. ये वाली हमारे पास 9 है. So should I fill the bubble or not? If I write down 9 here, तो 8, 7 यहाँ पे greater numbers should be written on this side, and I have to go on to the right side because x is greater than 9. Should I fill the bubble? No. No. ठीक है. ओके. हाँ, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें x is already negative, what you will do? You will take it onto that side where it should become positive. So therefore you will write down 8 minus 14 because 14 को आप इस साइड पे लेके आ रहे हो. Yeah. So x will become positive 2x, right? Mm-hmm. So it will become minus 6 is greater than or equal to 2x. Now divide both sides with 2. So 2 will cancel out and you will have what? Minus 3. 2 ones are 1. 2 threes are 6. So x is less than or equal to minus 3. Did you get it? Yes. Are you sure? Yes. Okay. Uh, office में. Yeah. Interesting. क्यों? वैसे ही. Okay. अच्छा ये देखें बेटा कि ना आपने इधर क्या करना है, नंबर्स को करना है. सो व्हाट डज दिस शो? डजंट इट शो कि x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 3? Hmm. Hmm? Yeah. So this is minus 3, this is minus 4, this is minus 5, this is minus 2, minus 1, and this is 0. So I have to fill the bubble or not? Yes. तो फिर आपको ये इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके. Okay. ओके. नेक्स्ट इज, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू जस्ट हैव टू टेक एक्स, smaller x towards bigger x so that it remains overall x remain positive, right? Hmm. बस आपकी आपने ये कोशिश करनी है कि ये साइन को आपसे गलती ना हो कि ये साइन चेंज करना है या नहीं होना है. देन जस्ट कीप ऑन मूविंग x onto that side where final x is positive. So when you will take it onto this side, it will become like this one: 4x minus 2x is less than or equal to plus 9. Then Hmm. 2x is less than or equal to 9 and x is less than or equal to 9 because 2 is getting multiplied onto that side. Mm-hmm. इधर आके डिवाइड हो जाएगा. 4.5. I'm pretty much sure when you will be doing it in the school, your teacher will say that divide both sides with 9, with 2, so that you can get x is less than or equal to 9 by 2. So that's also a right way to do it. Yeah, we did something similar to this. हाँ, तो ये हो जाएगा 4.5. And Mm-hmm. now if I have to draw a line, तो 4.5 है ना आपके पास, तो what you can do is, let's say 4.5 is this one, then 5.5, then 6.5, then 7.5, then 3.5 and 2.5 onto this side, right? Is it Mm-hmm. difficult? ये No. इस तरह से लिखना मुश्किल है क्या? नहीं. आप ये भी लिख सकते हो 3, 4, 5, 6. ठीक है. Hmm. तो ये लेस देन और इक्वल टू 4.5 बनाना है ना आपने. So should I fill the bubble? Yes. Why? Because 4.5 included. Okay.
अच्छा, एक और चीज़ जो आपके टीचर्स ने करवाई होगी, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन वो बहुत बच्चों वाली है। मैं समझता हूँ आप वैसे ही कर सकते हो, इसलिए मैं आपको वो करवा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, देखिए मतलब ये है ना आपके पास 3x, Hmm. what they would have said कि because we need to cancel out x, so subtract x on both sides, like also write on minus x. So what will happen, that minus x and minus x will cancel out, 3x minus x will become 2x, and then they would say कि because हमने, चलें इसको यूँ लिख लेते हैं, 11, and they now we have to take rid of -1. तो अब क्या करें, दोनों साइड्स पे +1 लिखते हैं, so this will cancel out, 2x will be less than 12. Now divide both sides with 2, and we will get what, x is less than 6, right? So this is very childish thing, Uh-huh. in a sense very basic level thing, but because you are going to O level, so you need to do work quickly. So just keep in mind कि आपको x उस साइड पे लेके जाना है जहाँ पर जाके ये नेगेटिव ना हो जाए. So just take it onto this side and you will get what, 3x minus x is less than 11 plus 1. You will get 2x is less than 12. Divide both sides with 2 and you will get what, x is less than 6. ठीक हो गया. Okay. तो अब अगर इसको हमने लाइन पे शो करना है, तो मैं नहीं कर रहा बेटा, आगे चलते हैं. ये देखें, यहाँ पे मैं बात कर रहा था. अब Yeah, आप देखो, should I take 5x onto this side, or I should take x onto right hand side? you should take X on to right side. Right hand side. I shouldn't do this one because otherwise x minus 5 will become minus 4x. ठीक है, हमने Hmm. माइनस 4x नहीं बनाना, इसलिए हम बाकी नंबर्स बेशक नेगेटिव बन जाएं, वो it does not make difference for us. We Hmm. have to keep x positive. For that, you take a negative 19 onto this side, and it will become plus 19 plus 3 is greater than, take this x onto the other side. 5x minus X. हाँ जी, 5x minus x, and you will get what? 22 and 4x. So now divide both sides with 4. So you will get 5.5 is greater than x, right? Yeah. अब 5.5 कैसे आया है ये, अब मतलब आज के तो नहीं ना हमने सीखना है, आज तो हमें इनइक्वालिटीज सीखनी है. सो Hmm. even if you write down something like 4, 5, 6, 7, 3, 2, क्योंकि हमें 5.5 बनाना है, सो 5.5 lies between 5 and 6, so it should be like this one. Okay. ठीक है, अदरवाइज आप 5.5 5 पॉइंट लिख के भी कर सकते हो. Say. ओके देन दिस क्वेश्चन, अब ये कि मुश्किल है क्या, क्या Hmm. करूँ, आप बताओ क्या करूँ, जल्दी से बताएं बेटा. सबसे पहले 2x और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो विल गेट 4x minus 2, देन उसके बाद we are going to take -2 the other side. सॉरी, -2 ऑन टू द अदर साइड, सो दैट 4x को क्यों नहीं लेके जाना. क्योंकि वो फिर नेगेटिव हो जाएगा. हाँ, उसे हमने नेगेटिव नहीं करना, सो वी हैव 15 इज लेस देन और इक्वल टू 4x, अब देन इसको हम अच्छा, now I write it this way. X is greater. हाँ Sorry. कर लेंगे, लेकिन एक स्टेप अभी कर लेना यहाँ पे. Okay. We're just gonna write कि वो 15 15 over ओवर, 4 is X वाली thing. हाँ तो 15 over 4 is less than or equal to x, or x is greater than or equal to 15 over 4, or x is greater than or equal to 4 3s are 12.75, right? So अब हम, अच्छा आपको पता है कि इसको आप यूं भी लिख सकते हो, like many students do, I've seen it, क्या? some students doing this kind of thing, जो कि Number line. नंबर लाइन थोड़ी डिफरेंट, जिसमें होल नंबर ना भी हो तो खैर है, वो वाले. फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे दिस इज 15 ओवर 4 ना, Hmm. तो दे वुड राइट डाउन 15 ओवर 4, यहाँ पे 16 ओवर 4, यहाँ पे 17 ओवर 4, 18 ओवर 4, 19 ओवर 4, एंड यहाँ पे 14 over 4, and someone would write it down like this one,
जैसे 15/4 को हम लिख सकते हैं कैसे, 3 into 3/5, ठीक है। Hmm. तो some people would write it down like this one: 3 into 3/5, 4 into 3/5, 5 into 3/5, 6 into 3/5, and so on, right? So इसको 2 into 3/5, बहरहाल we have to show this thing, और ये वाली दोनों सारी एक ही शेप्स हैं। बनती कहाँ पर है ये यहाँ पे बनती है। Hmm. So because we have to show greater than or equal to, so it can be shown like this one. आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी शो करते हैं, ठीक है। Okay. Even you can write down like 3.75 and then 4.75 and then uh, 5.75 and so on. Okay. Okay, so अब इसको कैसे करेंगे? First Um. we're going to multiply Well, yeah. 2x minus 6 is greater than or equal to x over 2 minus 5. So what should I do now? Just, Hum. just to get rid of fractions, right? Multiply everything with 2 because it is the LCM. So you can multiply 2 into 2x here, 6 into 2 here, then x over 2 into 2 here, and then 5 over 2. Oh, sorry, 5 into 2 here. So you see that uh, you get 4x minus 12 is less than or equal to x minus 10. Now take x onto this side, and now it will become plus 12, and you will have 3x is greater than plus 2, and x will be greater than or equal to 2 by 3. तो नंबर लाइन फिर अब आपको बताइए कैसे शो करना है, ठीक है। Hmm. सेम गोज विद दिस वन। क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप बताओ। सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, बस वो मल्टीप्लाई ओके, करेंगे. 2x/3 is greater than 12 plus 2x. Okay, now Now we're gonna multiply everything with 3. everything with 3. Okay, so 12 times 3 plus 2x times 3. So 3 and 3 is cancelled out, and we have 2x greater than 36 plus 6x. What should we do now? अब हम okay, so we're gonna okay, Mm-hmm. yeah. हम थर्ड Mm-hmm. हम 36 को एक्स वाली साइड पे लेके जाएंगे और एक्स को इधर लेके आएंगे, टू वो एक्स, ऐसा क्यों? ताकि नेगेटिव ना हो. So it will become minus 36, and it will become 60, sorry 6x minus 2x, ताकि x negative ना हो, ठीक है। Hmm. So we get minus 36 is greater than 4x, divide everything with 4, and you know that it will become minus 9 is greater than x. Okay. Is it clear Yes, or not? it is. Okay, next we have this one. Hmm. So it's very easy, you just have to multiply. And Yeah. okay, so this is last one. Okay, so what should we do? First of all, before doing anything, क्या करें, ब्रैकेट्स ओपन कर लें या पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लें? व्हाट डू यू थिंक? I think पहले, what difference would it make? नथिंग। कुछ भी कर ले, पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं. चलें पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लें। So we have 5 minus 2x over 3 plus 1, which is less than 2. No, not true. It is 6 minus 8x. Then we can have 5 minus 2x over 3. Multiply everything with 3 now. Plus 1 multiplied by 3. Then 6 multiplied by 3 minus 8x multiplied by 3. You know that this 3 is cancelled out, and we have now 5 minus 2x plus 3 is less than 18 minus 24x. Now take 24 onto the other side, so that it become positive. X
Now we will have positive 24x minus 2x. Mm. Take numbers onto the other side. 3 यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा. And 5 was plus 5. On this side it will be negative 5. And we will have 22x is less than 11. So no, it is 10. Okay. Mm-hmm. So x gonna be 10 over 22, Mm. which can be written as 5 over 11. And if we have to show it on the number line, we can show it like this one. Mm. आपके पास है तो हम कहीं पर भी 5 और 11 लिखेंगे. फॉर एग्जांपल वी राइट डाउन 5 और 11 यहाँ पे, देन 6 ओवर 11 यहाँ पे, 7 ओवर 11 यहाँ पर, 8 ओवर 11, 4 over 11, and 3 over 11. And because it is less than, so should I fill the bubble or not? No. And arrow should be towards left hand side or towards right hand side. It's greater, right? एक सेकेंड. ग्रेटर है ये. वो लेफ्ट हैंड साइड. हाँ जी, because it is x is less than 5 by 11, right? Mm-hmm. Hmm. Okay, so और फिर भी ना भेजो. हाँ एक और है, भेजो. हाँ show me. Okay. आप email करेगी. Yeah, I mean, that's Okay, okay, do it. okay. Give me a minute. भेज दे. Okay, let me see. Okay, I received it. Okay, the thing is कि it's not very difficult. Actually, it is very much easier. Mm. So पता है ना आपको क्या करना है. You just have to find out the answer and चलो हम इसको थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं. And then you will do it as homework. Okay. Mm. Why are you recording? It's top secret. Interesting. How top of a secret? Very top. I don't know. Wow. Okay. Top G. Hi, hi. Yeah. Okay. So the thing is um, कि अब हर एक चीज़ के दो दो solutions हैं. Tell me which should I do? I will do two questions. First, I will do this one. Okay, I have to do it in rough Um, first. For example, solution and the letters. Okay, so I will write it down here that minus 1 is less than or equal to x over 2, which is less than 2.5. So what we can do here is minus 1 is less than or equal to x over 2. Now you can take 2 onto this side or multiply everything with 2. We don't break the rule that we just have learned. So x over 2 times 2, so 2 and 2 will cancel out, and it is like this. So x is, you can say that x is here greater than or equal to minus 2, right? mm-hmm. And another thing is that we have to take this one as well. So here it will be x over 2 is less than 2.5. In order to solve, multiply everything with 2, 2 cancel out, and x is less than 5.
So we got two solutions. One is minus 2 is less than or equal to x. So we should write it down here. अब वो कहते हैं कि solve each inequality, link your answer to the two separate inequalities in the table and unjumble the letters to find the name of a film. Okay, Yeah. so एक है हमारे पास solution आ गया, x is greater than, we can also write it down like this, x is greater than or equal to minus 2. So G. अच्छा ये देखिए यहाँ पर भी है, no it is here, g Oh, किधर है? हाँ g भी है एक. So you see that this is one of the solution that we had find out. So we write down it, minus 2 is less than or equal to x, and another one is x is less than 5. So x is less than 5 is also here, जो आपने find out किया. No, but that is not x is less than 5, it is x is greater than 5. So we need to find out x is less than 5. Is there any x is less than 5? Yeah, n is there. ये नहीं बनता, ये तो x greater than 5 है ना. This is, वही तो. you see, this is x is less than, हाँ. हाँ जी. So you will write down here first o, and then you write down here n, right? तो एक तो ये वाला क्वेश्चन कर लेता हूँ. इस तरह से आपने वर्ड्स लिखने हैं, फाइनली आपको पता ही है कि एक फिल्म का नाम बन जाएगा. ओके, सो वो क्या नेक्स्ट इज, हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं. क्या कुछ कह रही हैं आप? आपको क्या लगता है कौन सी होगी? ब्लैक जो, सॉरी जो ब्लैक. Yeah, the नो इट विल नॉट बी, बिकॉज 1 2 3 4 5 वो लेटर्स हैं. कौन सी होएगी? पता नहीं, ये तो देख के ही पता चलेगा. हाँ एग्जैक्टली. ओके I सो have a dare. हाँ जी, ये आप करके फिर मुझे सेंड कीजिएगा ना अभी. अभी कर लेना. सही ओके. है. So ओके. minus 2 is less than or equal to 2 into x plus 1. We call it as compound inequality because like we can solve it in two ways. One is आप ये वाली इसको solve करें पहले, तो minus 2 is less than 2 into x plus 1. So it will become minus 2 is less than 2x plus 2. ठीक है. Then you will take it onto the other side and it will become minus 2 is less than or equal to 2x, and it will become minus 4 is less than or equal to 2x. Then you will divide it with 2, and obviously you will get what, x is greater than minus 2. So so tell me, what should be the next one quickly. Wait. अनम जल्दी करें क्या. वो 2x plus 2 greater than ब- 8. बच्चे पहले आपने ये नहीं बताना कि बनता क्या है. 2x plus 1 is less than 8, right? अब ये 2x plus 2 is less than 8, and now you take 2 onto the other side and you will have what, 8 minus 2, and 2x is less than 6 and x is less than 3. तो अब हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ गए हैं. सो वी शुड राइट डाउन फर्स्ट सॉल्यूशन, देन वी शुड लुक फॉर द लेटर्स. एक हमारे पास बन रहा है माइनस टू इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, और दूसरा हमारे पास बन रहा है एक्स इज लेस देन 3. सो अब हम देख लेते हैं इसको कि माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू एक्स किधर है. ये नहीं, कैंट यू फाइंड आउट. Sorry. It is वी ये डिड टी समथिंग है. रॉन्ग. हाँ एक तो टी आ गया, ठीक है, दैट्स फाइन. तो एक तो हम टी लिख देंगे. और ओके, दूसरा वाला शायद एग्जिस्ट ही ना करता हो. माइनस टू, सो एक तो सी है लेकिन उसके नीचे लेस देन और इक्वल नहीं है, सो विल नॉट टेक सी. ओ, ये वही आ गया ना, ओ आ गया हमारे पास. ओ या ओके, या
Okay, so we will leave here and complete it and send me the solution. WhatsApp कर दीजिएगा आप. सही है, फिर मैं आपको रात को करूँगी जब मामा आएंगे. हाँ ठीक है, that's fine. Okay, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.